हाँ, देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीपीएससी मेंस के एग्जाम दे रहे होते हैं एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस. So whenever you start anything, you need to learn the syllabus by heart. Because when you are going to do this, half the syllabus you have already completed because you will be able to analyze like how to do. So for clearing means with high rank, or maybe if you want to be that topper, you have to keep two things in mind. The first thing is that you need to be aware of the syllabus, and second thing is previous year questions. You need to be aware of it, and one mentor you need. Although there are people who says that self-study matters the most, of course it does. I'm not promoting any channel, but the thing is that if you'll have any mentor from a good channel, you will be able to understand like where you are going wrong, where you are going right. In case if you're able to do it by yourself, then that's well and good. But in case if you're not and you have a mentor to guide you, that is better. And now it's up to you. I'm not going to force anyone for anything, but the thing is, you need to work hard. 80% your own efforts will matter, and 20% from elsewhere. So let's start. The first thing is the syllabus. See, all candidates, see, compulsory paper is there, which all candidates must appear. Optional paper is something which you just need to pass. Personality test, where interview, where it will be watched how you sit. There is a great observation of your act, like how you sit, how you do your task, and how you talk, and there's so many things. So general paper Hindi, it's of 100 marks, and you just need to qualify. But it doesn't mean that if you just have to qualify, then you're not going to pay attention to it. So, essay writing 30 marks, grammar 30 marks, and sentence formation 25 marks. And summary, process writing 15 marks. And you must secure at least like 33% of marks. General studies paper, Indian history. Okay, in Indian history, what you need to focus? Modern history. Okay, in Indian history, what you need to focus is modern history. Racial movement, 1857 revolt, peasant movement, Gandhi phase, Quit India movement, and Bihar's special role in freedom struggle. Champaran, 1857 revolt, 1942, Quit India. Indian culture, art, architecture, literature with a special reference to Bihar. Statistical analysis, data interpretation, graphs, charts, diagrams, interpretation, and conclusion. GS paper 2. Okay, it will be of 300 marks and of course of 3 hours. Indian polity, constitution, political system, panchayat, special focus, public policy, government specific program, environment development, agriculture, industry, demographic, geography of India, emphasis on Bihar, soil, rivers, agriculture. In science and tech, you need to focus on the role of science and technology in development, IT, biotechnology, space, nuclear, robotic, AI, current development with the impacts.
Role of science and tech in development, IT, biotech, space, nuclear, robotic, AI. Now next is optional subject. You will be having a lot of choices for the optional and personality test. There will be current affairs, GK, or anything can be asked. So GS paper test clarity, analytical ability, and Bihar focus. Optional paper is your game changer. It can of course change your game, but nowadays it's just qualifying. Okay, it's not something to be focused much more. You need to focus more on GS1 and GS2. हिंदी 100 मार्क्स के हैं. स्टैटिस्टिक्स में आप देख लेना डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, चार्ट्स, डायग्राम्स. तो आपको करना क्या है ना, आपको सिलेबस को रीड करना है. सिलेबस ऑफिशियल चैनल में भी दिया हुआ है. आप जाओ जाके सिलेबस रीड करो, क्योंकि जब आप सिलेबस रीड करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ समझोगे. जैसे जिनका सोशोलॉजी है तो साइंटिफिक स्टडी, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, रिलेशन, अदर डिसिप्लिन, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिविटी, रिएबिलिटी, साइंटिफिक मेथड, डिज़ाइन, कॉजेशन का कॉन्सेप्ट. तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चीज़ होंगे. तो सबसे पहले आपको जाके वहाँ पे जाके देखना है. जैसे यहाँ पे पीजेंट चंपारण, ये तो कुछ ऐसा टॉपिक है जो हर साल का हो गया है, नहीं ना, पूछा जाएगा. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो देखो क्वेश्चंस कुछ बहुत वो नहीं है, बट क्वेश्चन की अगर आपको क्लैरिटी होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, आप अच्छे से लिखोगे, तो लक फैक्टर है एंड डेस्टिनी. तो वो देखो, destined, everything is in your destiny, but you don't know what. So you have to work hard to achieve whatever you want to. Positivism, historical sociology, functionalism, conflict school, recent approaches, social structure. तो यहाँ पे ना बहुत सारे चीज़ें, किनशिप वगैरह आप देख लेना. आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, या तो वहाँ पे तो ऑफिशियल सिलेबस होगा, बेस्ट है इंडियन सिस्टम. देखो कितना ज़्यादा है, तो यू कैन डू. ओके, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट. ऑफकोर्स यू कैन. चाइल्ड मैरिजेस वगैरह, और ऑफकोर्स एक मेंटोर गाइड होंगे तो थिंग्स विल बी इजी. अब मान लो आपके पास 60 दिन है, तो आपको एग्ज़ाम का डिमांड जानना है. मेंस में जनरल हिंदी, GS1 वेटेज, GS का 600 है, ऑप्शनल 300 है, 900, 120 से इंटरव्यू. तो आप ये जान लिए. टाइम डिविजन करो, 12 घंटा आपको सीरियसली पढ़ना है. होता क्या ना, कभी कभार आप 20 मिनट बैठते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 10 मिनट का होता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव स्टडी. सो 10 minutes will only be in the count, not that 20 minutes where you are just thinking, you have opened your book and you have something else running into your mind. So that is not going to be counted. What will be counted is that when you are sitting, how much concentration is there. There is a time when you start studying and everything you grasp up within a second, and there is a time when you just try to learn it out and you're not able to, because you're just thinking something else. You are like in depression maybe, or whatever. So this is what really matters. So I'm talking about the qualitative. GS paper 1 always give 3 hours because it carries more marks. GS paper 2 3 hours. History, culture, geography, statistics, politics, economy, science tech, Bihar focus. Optional also, suppose you are given 3 hours. Okay, 3 hours to the optional. You give now 1 hour you can give to the current affair, Bihar specific updates, because every day you are going to have some new current affairs and you don't know what kind of current affairs is going to be asked. And then 2 hours of answer writing practices. And if possible, 1 hour of revision. Bihar river, soil, agriculture, art and painting, Bihar role, Constitution, governance, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1961. ये तो छोटे छोटे से आ जाता है शॉर्ट नोट लिखने का. तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ AI, रोबोटिक. मैथ्स पेपर दुर्खाइम तो करना ही है. मास्टर कास्ट, फैमिली, रिलीजन, सोशल चेंज, लिंक विद द करंट इशूज. अभी तक रिजर्वेशन वगैरह जो भी चलता आ रहा है, यू नीड टू लिंक इट. जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो 2 क्वेश्चन चाहिए इसका, प्लस एक सोशोलॉजी का. इंट्रो, बॉडी, बॉडी में बिहार लिंक करो, एग्जाम्पल्स दो, सोल्यूशन में कोट्स वगैरह याद करना स्टार्ट करो.
फर्स्ट 30 days कवरेज ऑफ सिलेबस, डोंट गो टू डीप, ठीक है। देखो इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप बहुत डीप लिखो। कितनी बार क्या होता है ना, एक गलती हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक कास्ट उठा लिया, ठीक है, इजी कास्ट, या चलो एक ऐसा पोवर्टी, चलो हमने पोवर्टी उठा लिया, तो हम पोवर्टी के बारे में इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, मतलब हम 40 pages पढ़ लेते हैं डीप, ये भी लिख देंगे वो भी लिख देंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस दैट you are only able to write one answer nicely, and rest you score less marks and you don't get a name in the examination final list. You are out of the merit list. So you need to be smart enough. You just have to prepare a notes. A note should not be of more than 6 pages. Okay, more than 6 pages notes, if you're making, you're wasting your time. So don't try not to make notes of 6 pages. You don't have that time, because see, suppose you have learned a book on, you did a work, long lengthy book, you did a PhD on poverty. It's not possible to write everything. You can only be writing the important things, and if you study so much, you'll be forgetting like what is important, what is more important, what is less important, what should be there, which is more scoring. So you don't have to do this mistake. अननेसरी बुक टॉपर स्ट्रैटेजीज मत देखना। अभी आपके पास यू हैव द टाइम, रिजल्ट आया नहीं है, फ्री हो, तो यू कैन जस्ट वॉच द टॉपर स्ट्रैटेजीज। लेकिन जब आपके पास 60 days ही है, तो उसमें स्ट्रैटेजीज वगैरह का क्या करोगे? स्ट्रैटेजीज देखना है, अभी रिजल्ट नहीं आया, चलो ठीक है, हर दिन 5 मिनट का स्ट्रैटेजीज देख लो, 1 week तक आप देख लो स्ट्रैटेजीज 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 60 days से पहले कोई स्ट्रैटेजीज नहीं काम करती। इसी में फैक्चुअल देखना, ग्रामर, संधि, समाज, ईडियम, सिनोनिम्स, ठीक है। जस्ट क्लियर 30 मार्क्स टारगेट। बहुत डीप भी नहीं जाना है और बहुत कम भी नहीं करना है। बिहार फोकस करना, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, फैमिली किनशिप, सोशल स्टेटस, रोल, कॉम्टे, पार्सन। इंडियन पॉलिटी पे प्रीएम्बल, फीचर्स, अमेंडमेंट, ये तो पक्का देखना। फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी ड्यूटीज, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म देख लिए। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी देख लेना। गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया। पंचायती राज, ये सब देख लिया। गुड गवर्नेंस, नीति आयोग, 5 year प्लान, ग्रोथ, डेवलपमेंट इंक्लूसिव सेक्टर, एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फूड इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हर घर, इंडस्ट्रीज, माइग्रेशन प्रॉब्लम। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसरो का मिशन, चंद्रयान, मान लो आ गया शॉर्ट नोट्स, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोटेक। हर एक टॉपिक को कोशिश करना बिहार से लिंक कर सको। फ्लो चार्ट मैप इज़ इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से ही नीति आयोग को कोट करना। देखो ये वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे करके आप 60 days चैलेंज करके देखो। रिवाइज करना 3 बार, कम से कम 3 बार रिवाइज बिना किए हुए मत जाना। इनफैक्ट आई वुड से कि आप 3 महीना का भी अगर आप टारगेट लोगे ना नवंबर, देखो बहुत ज़्यादा तो ये सुनाई में आ रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही हो जाएगा, तो यू डोंट हैव टाइम। आई होप कि रिज़ल्ट के बाद अगर आपको 60 days मिले, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है ये।
देखो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाना कि आपको रिज़ल्ट के बाद 2 महीना मिले। कभी कभी ना 1 महीना मिलता है, ठीक है। जैसे जून में तो यूपीएससी होता है, जुलाई एंड अगस्त के एंड में, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद, अगर आपको एग्ज़ाम के बाद आपको इतना दिन भी मिल रहा है ना, अगर आपको एग्ज़ाम के बाद 60 डेज़ मिल गया, यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि ये बहुत होता है। यूपीएससी वगैरह में तो इतना भी नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब आप मेंस की तैयारी प्री के साथ ही करो। अगर जिसको कोई नॉलेज नहीं है, आपका डे 1 है, आप अभी जाके सिलेबस देखो। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बस आप देख लो, ताकि प्रैक्टिस करो। एक और मेंटर, 2 मेंटर को लो, ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस पता चलता रहे। बाकी वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।